हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। रादर जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। हाय का वो हटाना है, हटाना है। अब मुझे आदत डालनी है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छे मूड में हों, अच्छी एनर्जी में हों, अच्छा महसूस कर रहे हों। आज राधिका की बारी है। आज राधिका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक्सपीरियंस जो है, अपना कनेक्शन जो है सुशांत के साथ कैसे हुआ और क्या उनकी लर्निंग्स हैं वो शेयर करेंगे। और सबसे पहले let's see if Sushant wants to say anything and then we can have her on and we can start. So let me see. और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ आज मेरे साथ. So let's see. Sushant, if you want to. Okay. So is there any arrest or anybody that is moving close? रहे हैं. He's showing somebody getting arrested or somebody getting sick. कोई बीमार, कोई अरेस्ट, कोई हॉस्पिटल, कोई एक किसी फेज में आने की एनर्जी ही इज गिविंग इट फ्रॉम मॉर्निंग. तो मुझे पता नहीं कि अभी हुआ है नहीं. थैंक यू चंद्रा, थैंक यू खुशबू. बट दैट एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आइडली आज पिछले कल और आज के बीच में देयर शुड हैव बीन सम काइंड ऑफ अ अरेस्ट जो होना चाहिए. जस्टिस, कोई अरेस्ट तो होना चाहिए था. आज और कल के बीच में एक्शन हुआ लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ. सो इफ यू सी हिम, ही इज हियर विद थ्री ऑफ सोर्ड्स, thief and a splash that exposes the thief. तो एक स्प्लैश जो थीफ को एक्सपोज कर देता है. तो दिस इज हिज एनर्जी व्हिच इज ब्रिंगिंग सेलिब्रेशन. सो डेफिनेटली कुछ तो बहुत आइडली एनर्जी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट शुड हैव हैपेंड टुडे. आज हो जाना चाहिए था. लेट्स सी इफ वी सी समथिंग हैपनिंग. अभी भी आज दिन बाकी है, अभी रात बाकी है. अभी लेट्स सी क्या होता है. राधिका, मैंने लिंक डाल दिया है, मैं दोबारा डाल देती हूँ. इफ यू कैन नॉट सी द लिंक एंड ज्वाइन, क्योंकि फिर यू विल हैव इनफ टाइम बिफोर द प्रेयर कि आप अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर कर पाओ. तो मैंने लिंक दोबारा से शेयर कर दिया है. और आज सुशांत का मैसेज दोपहर में मैंने नहीं दे पाना था, तो आई वाज गोइंग फॉर माय कार सर्विसिंग. तो दोपहर का मैसेज मैंने बोला था कि मैं नहीं दे पाऊंगी. अपेरेंटली आई वेंट एंड आई हैड टू स्पीक टू समबडी. तो मैं यूजुअली कॉल्स नहीं लेती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता. तो while moving वो कॉल भी हुई. ओके, सो हाय, राधिका इज हियर एंड हम पहले शुरू करते हैं राधिका का एक्सपीरियंस सुनना एंड देन आई विल शेयर मेरा आज का एक्सपीरियंस जो है वो क्या रहा है. यस राधिका, ओवर टू यू. जय हिंद, जय भारत, Hare जय Krishna. हिंद, हरे Actually, I am कृष्ण. more excited to know how come you reach so early. Actually, मैंने सुबह आपको लिखा भी था, please don't worry. मैंने ट्विटर पर डीएम किया था, please don't worry if you get late also. Everything will happen as per his wish. Yes, so So, I will say it once you are done. हम सेकंड प्रेयर के बाद मैं शेयर करूंगी कि मैं जल्दी कैसे पहुंच गई. जल्दी नहीं, बहुत जल्दी. ओके. okay. So I still have a bit of cough, so voice might not be that नो clear. प्रॉब्लम्स. Yeah. So I will start with pre 2020. तो एक्चुअली जब उनका जो फर्स्ट सीरियल था किस देश में मेरा दिल, मैंने आई वाज सीइंग द एड. सो उसी टाइम पे देयर वाज अ सिमिलर सीरियल, एनआरआई स्टोरी, पंजाबी लड़की, एनआरआई लड़का, ऑल दोस थिंग. आई वाज लाइक मल्टीपल स्टोरीज, ऐसे मल्टीपल सीरियल चल रहे थे, तो मैं इसको नहीं देखूंगी. सो दैट सीरियल आई डिडंट वॉच. सो फिर पवित्र रिश्ता आया. And at that time, I was watching like some of the episodes, mainly because obviously देखना अच्छा लग रहा था. And वो जो गाना आता था ना, साथिया तूने क्या किया, whenever they are there together, both the male and the female characters are there together, this song will play and मुझे बहुत अच्छा लगता था. I used to feel that it suits well for him. But I didn't see much of the episodes. थोड़े बहुत ही देखे थे. I felt it like typical Unity Kapoor serial, तो मैंने ज्यादा नहीं देखा. And even my work also started getting more. So but so then comes the one thing which I very clearly remember is I think 2010 में शायद उन्होंने जरा नच के दिखा में
he had Hmm. participated. Hmm. So I don't remember most of the episodes I've seen. I've seen all the episodes. Weekend में होता था. So I've seen Hmm. all the episode, but this one episode जो Mother's Day के लिए उन्होंने किया था, and he was not performing. He was sitting there, and other people gave a tribute to his mother. Hmm. So that I very well remember because that was the first time I got to know about his mother and वो जैसे वो emotions I was able to feel his emotions at that time because like I very clearly मुझे तब से याद है वो like he was in that white shirt and with a black coat and Hmm. red Hmm. scarf. Hmm. So वो मुझे that thing I very clearly remember and that day I was just looking at him at that moment. Hmm. Okay. Hmm. Now, what happens is later, वो जब मूवी में आए, I mean all these things like पवित्र रिश्ता छोड़ दिया and all those things I get to know from news. I mean वो स्टार का न्यूज में आता था, but Hmm. I was not watching much. Hmm. Um, फिर जब मूवी में आई, so then I would say that पीके जब आए थे, actually पीके was like I am not that much convenient in watching it a theater. मेरा like बचपन में था वो शौक बहुत था कि जाके देखना है. But Hmm. then slowly it came off. Hmm. And बाद में only I had started watching. I think till for a long time, almost 10 years, I was not even going to a theater to watch. Hmm. So and very rarely I used to watch. And जब पीके के लिए गई थी and there were multiple reasons also to stop watching also. Hmm. तो Hmm. पीके जब गई थी पीके it was as you said yesterday I went to watch the other film. Hmm. So I was actually a big fan of Shah Rukh Khan. Okay, Hmm. so and बाकी दोनों का the other two Khans also I movies में देखती थी multiple times जो you know 90s की movies. Hmm. So Hmm. I went for this PK and मुझे नहीं पता था that Sushant is there. Hmm. And uh, जब सुशांत आए ना वो इनिशियल सीन्स में Hmm. I was like I was like watching at him only I was like so happy and my father was like अरे ये तो अपना वो है सुशांत है. Hmm. So I was like yes. So and then the thing like I had literally like stopped watching movies at the theater. मैं पहले Hmm. आई वाज मुझे बहुत अच्छा लगता था अवार्ड शोज टीवी पे देखना तो मैंने वो भी बंद कर दिया था भाई 2014-15. So whenever Hmm. he started performing I have not watched actually. So Hmm. and then what happens is वो जो चाय कॉफी वाला शो होता है ना. Hmm. So in that once sorry in that once Kriti had come Hmm. Hmm. and I'm not remembering which year and Hmm. she had told that Sushant has a telescope. So me being somebody who's interested into astronomy, मुझे Hmm. वो बहुत अच्छा लगा that oh wow he's also interested into it and they were obviously like the host was making fun of his Twitter post and other things. It's like Hmm. देखना पड़ेगा कुछ तो है there will be something so but I was like being an introvert I was hesitant to open an account on Twitter. पता नहीं क्या होता है कैसे होता है and all those things Hmm. and uh, I think when 2018 probably I started following him in Facebook and Twitter. Hmm. तब मेरा दूसरा आईडी था. Hmm. But मैं फिर भी मैं लिखती नहीं थी. I will just watch. I will not even give a reaction also. Okay, I will just read the post. It was like Hmm. that. Hmm. And finally, in 2019, Hmm. when he went to CERN, Hmm. वो स्विट्जरलैंड में वो जो Hmm. न्यूक्लियर ये पार्टिकल रिसर्च का वो गए थे एंड ही हैड पोस्टेड दैट ही इज विजिटेड देयर. Hmm. मैंने मुझे सिर्फ यही लिखा आई वाज लाइक मुझे आज तो लिखना ही है. आई जस्ट रोट यू Hmm. आर रियली लकी. सिर्फ वो एक Hmm. कमेंट मैंने डाला है दैट इज द ओनली Hmm. थिंग. And Hmm. by then, I think 2019 he had minimized using social media also. ज्यादा post नहीं कर रहे थे. Hmm. हाँ. So and even I was not doing that. He was more into Instagram. मेरा भले ही Instagram में अकाउंट था मैं यूज ही नहीं कर रही Hmm. थी. पता नहीं था क्यों लेके रखा था. It was in that situation. Hmm. So somehow like it was going in that way.
And okay, now I'll come to that particular day. I should better say it from 13th night. Hmm. मेरा actually एक पेपर सबमिट होना था 14th को. That was the plan. Hmm. प्रोजेक्ट का एक पेपर सबमिट होना था. And I was working weekend also, like you have to work. So 13th night, Hmm. when I was going for sleep, I don't know why I started feeling a weird silence. Hmm. 13, and that silence, like all next day morning, I woke up at 6 because of the work. But Hmm. entire day when I was working, like कुछ तो है, some kind of weird silence. I don't know what I was, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. Hmm. And मैं जो भी एनालिसिस में कर रही थी उसका रिजल्ट मुझे मिल ही नहीं रहा था. लाइक ऑलमोस्ट 5 hours इट वाज गोइंग ऑन एंड ऑन, सम काइंड ऑफ, पता नहीं क्या हो रहा था. एवरीथिंग वाज गोइंग लाइक टोटली रॉन्ग, टोटली ऑफ. Hmm. एंड Hmm. और उस दिन मेरा ब्रेकफास्ट लेट, लंच लेट, एवरीथिंग लेट. So I Hmm. was having my lunch, I think around 2:30 or something, and my brother, he was a COVID ka time tha, so luckily he was here at home. Hmm. Neither he stays at a different location. So Hmm. he was watching News 6 channel, and he said this Hmm. news. I said it might be a fake news. Hmm. तुम Republic check करो. And he Hmm. switched to Republic. The same news came there. I was like, Hmm. it's impossible. अभी अभी CERN जाके आया, because I'm remembering that as the last Hmm. this Hmm. one. Nice. Yeah. So I was like, it's impossible. And I was like, he is multi-talented. He Hmm. can't do that. पता नहीं मेरे मन से सिर्फ यही जो आ रहा था, he can't do that. He can't do Hmm. that. The Hmm. heart was going on saying that, and um, Hmm. even my brother was like, this looks like something serious. कुछ तो Hmm. गड़बड़ है उसमें. Good. Hmm. And, yeah. So like that it went on, and then I have to tell you, रात को मैंने वो पेपर सबमिट की थी, ठीक है, 14th नाइट Hmm. को. इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग ऑन द टीवी, इन बिटवीन मैं देख रही हूँ. Hmm. That paper Hmm. bounced back from the editorial team for a Hmm. technical reason. Hmm. उन्होंने बोला कुछ टेक्निकल इश्यू है, इसलिए Hmm. वो बाउंस बैक हो गया. 14th was not meant to be, it was Hmm. not meant to happen on 14th या ऐसा कुछ. Hmm. So और लाइक तब तो सबका ये आदत हो गया था ना, जब ऋषि कपूर जी चले गए थे. इट वाज लाइक सब, एवरीबॉडी विल बी लाइक पुटिंग स्टेटस, व्हाट्सएप में स्टेटस लिख दो, RIP एंड ऑल Hmm. दोस थिंग्स. Hmm. मुझसे सुशांत के लिए लिखा ही नहीं जा रहा था. मुझसे वो was, WAS had, Hmm. past tense में Hmm. नहीं लिखा जा रहा था somehow. Hmm. And then next day onwards, 15th onwards, I started like YouTube में automatically all these interviews and other things were coming. So there were a few interviews which like I'd say I'd seen a few earlier. A majority of them I had not seen. So especially एक जो वो थिएटर के स्टेज पे जो उनका फिल्म कंपेनियन चैनल में हुआ था. So वो मैंने जब देखा, and where it says that I will buy a 5D camera and do whatever Yeah. if it comes to that stage, I Hmm. was Hmm. like, I'm reconfirming what my heart is saying, that he can't go. Hmm. Hmm. And yeah, so but then so then I have to tell you one thing, that uh, somehow I have heard from many people that they went into depression after knowing this. मेरे केस में actually I was in a kind of depressed situation. I was, due to so many things happening in my life. Uh, Hmm. Once I'm back from office, there have been many days in the evening where I used to cry Hmm. in my room alone. I would sit and cry. There used to be many days like that. And Hmm. but I have not cried after 14th on that past, Hmm. because मेरा सिर्फ एक ही फोकस था, सुशांत का, जस्टिस सुशांत के केस में क्या हो रहा है. आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज हैपनिंग. एवरीडे इवनिंग वापस जाके फोन निकालो और चेक करो यूट्यूब पे, जो भी चैनल्स कहीं पे भी आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रिपब्लिक देखो, कहीं पे भी देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. It Hmm. he literally, indirectly or directly, he has taken me out of that depression. He's taken me out of it. That's good. So yeah, so I meant भूल ही गई थी so many things like that. Oh, it used to be like that. मैं भूल ही गई थी. It was Hmm. going on like that. And Hmm. but then
And I was watching, obviously, I was watching Vivo के वीडियोस जो भी चैनल में एज यूजुअल जो भी सब लोग बोलते जो हाँ, भी चैनल में हाँ, गए थे मैं थी बट आई वाज नॉट कमेंटिंग ऑन एनी ऑफ देम इवन योर वीडियोस आई वाज वाचिंग आई वाज नॉट कमेंटिंग हम्म, आई थिंक आई स्टार्टेड कमेंटिंग लाइक शायद मार्च अप्रैल टाइम पे जब वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज शुरू हुआ था दैट वाज द टाइम मैंने स्टार्टेड लाइक थोड़ा सा लिखा फिर भी आई वाज हम्म, लाइक नहीं मैं ज्यादा नहीं लिखूंगी हम्म, पता नहीं क्या था आई डोंट नो व्हाई दैट hesitation to write. हम्म, Uh, and then I have to tell you what happens is the my situations in life started getting tougher. हम्म, So February 2021, there was some issue which happened at the place where I was working, and I became like very upset. And उस हम्म, टाइम पे मेरे भैया ने बोला था यू स्टार्ट रीडिंग आदित्य हृदय स्तोत्र हम्म, एंड हम्म, हनुमान चालीसा. हम्म, So मैंने क्या किया आई मेड अ प्लेलिस्ट ऑफ वेरियस भजन्स वो प्लेलिस्ट हम्म, अभी अभी भी मैं सुनती हूँ एवरी डे आई वुड लिसन टू दैट इवन आफ्टर गोइंग टू द ऑफिस अगर 15 मिनट मैंने अगर वो प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं किया घर पे अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई गो टू द हम्म, ऑफिस एंड देन लिसन एंड उसके बाद ही आई मेक श्योर दैट आई विल लिसन इट so हम्म, and it was somehow giving me the strength. हम्म, You say like you can't overnight transition to spirituality. Complete spirituality is not possible. It absolutely not. happens with time. It happens with time, and probably for me that was the starting point, हम्म, the transition time. And then, um, so June 17th को क्या हुआ? June 17, 2021 I'm talking about. हम्म, One of my go-to friend, like हम्म, जो भी issues जो भी होते हैं मैं she was one of them जिनको मैं खुल के मैं बोल पाती थी उस हम्म, दिन she met with an accident all of a sudden at the वो गिर गई सीढ़ियों से गिर गई थी and she got hospitalized and then bed rest at home and all this हम्म, and within after she got she uh, stopped coming to the office within a few weeks some like वो बोलते हैं ना कि politics office politics like there will be a हम्म, Dhritarashtra who wants his favorite Duryodhan and Dushasan to get everything and not हम्म, the deserving Pandavas in that way so it was going on like that and it had become totally worse मेरे लिए हम्म, बहुत ही difficult situation था so by July I will say that I had literally come to a breakdown stage like हम्म, professional and even personal life also it was not going in a positive way so dono I was literally like broken down and I हम्म, had I had even started thinking कि जिंदा क्यों रखा है why am I alive हम्म, why am I living my life like this which is not going anywhere हम्म, so then what happens is अगर आप लोगों को याद हो तो 16th August को Vibor had tweeted that he had filed a PIL against family members and हम्म, उस रात को उन्होंने लाइव शुरू की थी आई थिंक इट स्टार्टेड अ बिट लेट ओके हम्म, एंड मैंने मेरे आई व्हाट आई डू इज अगर रात का लाइव व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम वाज लाइक इनिशियली मैं हाफ एन आवर देखती हूँ और बाद में आई कंटिन्यू इन द नेक्स्ट डे इवनिंग हम्म, so it was like that so I thought I will do the same हम्म, because even though COVID and other things, lockdown ho ya na ho, for us it was mandatory to go to the university. हम्म, So, हम्म, so it what happens is मैं थोड़ी देर मैंने वो देखा and then I slept off and I think maybe around 1 o'clock या 2 o'clock. हम्म, Suddenly I start seeing a dream. In the dream, I am like seeing both of them, Sushant and we both. Okay, हम्म, and and going on saying मुझे live देखना है मुझे live देखना है and I'm seeing these two people okay हम्म, and I woke up and हम्म, you'll not believe within 10 minutes of me waking up Vibor is हम्म, reading out this big brother का message है and I was हम्म, like so there was and then after that I thought that I should tell it to Vibor हम्म, okay, this is what happened and I wrote to him by I think as soon as the live got over मेरे पूरा live देखा उसके बाद
And then, Hmm. I wrote to him saying that this is what happened. I saw both of you in the dream, and as soon as I woke up, as soon as I saw your live, I heard, I was seeing you saying that बड़े भैया का message है, मेरी family का problem ये है. It goes on like Hmm. that. Okay. Hmm. And then the series of dreams continue, and you see everywhere, and all those things happen. And I'll tell you a car situation. Similarly, like फिर से आई थिंक सितंबर में ये सिमिलर सिचुएशन हुआ. 18th आई थिंक सितंबर 18th को था, सैटरडे था. वो लाइफ द लाइफ स्टार्टेड विथ लाइक सोनो सूद रिलेटेड कुछ Hmm. लाइफ शुरू Hmm. हुआ. एंड उस दिन मुझे हेवी हेडेक था, सो आई हैड स्लेप्ट ऑफ बाय 9:30. ओके. एंड Hmm. देन again I'm seeing a dream where in the dream actually I am with my father. I am in a कोई मार्केट में हूँ. ओके. एंड सडनली सुशांत कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, वो मार्केट में सपने में. Hmm. Okay. And and then what happens is I wake up. It's like ये सपने मैं मार्केट में थी, सपने में मार्केट में थी, सुशांत आ गया, कुछ तो है. Hmm. And then I woke up and again I opened, मुझे लगा देखती हूँ यूट्यूब खोल के देखती हूँ कुछ तो होगा. And then Hmm. I was like everybody was saying intended audience is about to come. I was like ये intended audience क्या है? Hmm. थोड़ी देर में समझ में आया ये तो सुशांत के बारे में बोल रहा है, सुशांत आएगा Hmm. शायद. Like the super anxiety test which we all had that night, I think Hmm. it went on till like almost 6:30 This तक को. morning. Then yeah, yeah, and in between even he had connected with you and you had uploaded a video and all this. So Hmm. that was super anxiety test. Hmm. So and I remember that one. And then what was happening was I was able to understand, I was able to interpret whatever happened to him, and whatever is happening, Mahabharat, Ashwatthama, Yudhishthir, and all those things. Hmm. So, so many things I was able to understand. And at that time, I was contacting only Vibhor and sometimes to Grace. And आपसे I think about the dreams I had written once. Hmm. So I asked Vibhor once, why am I able to understand all these things? Why am I able to interpret all these things? So Hmm. he said, you have been chosen for it. Hmm. You have been chosen by Sushant for it. And Hmm. like मैं उल्टा पूछ रही हूँ, सुशांत ने मुझे क्यों चुना? सुशांत he doesn't even know me. So Hmm. that is what I asked him. Okay, Sushant doesn't even know me. Why did he choose me? Hmm. So विभोर का जवाब आता है, did Sushant knew me that he chose me for this? Hmm. Like, none of us were like in that way connected to him that कि हमको चुने या whatever. I उस टाइम पे मेरा दिमाग यही सोच रहा था. Hmm. And then so many things were happening. So many क्या बोलते हैं, जलेबी Hmm. जलेबी चक्रव्यूह चल रहा था. बहुत सारे चक्रव्यूह this naughty Krishna was doing for me. And during your live only when जब हम prayer कर रहे थे, Hmm. I think sometime in October first week or something, Hmm. the I would say this was the most beautiful magical experience which I had. Is तो मुझे यूजुअली ऐसे विजन्स नहीं आते हैं. सो आई लाइक मैं बस इमेजिन करती हूँ, प्रेयर करती हूँ. Hmm. Hmm. Suddenly Hmm. I was at Guruvayur temple entrance. Hmm. उसी टाइम पे वो शाम को वो all the lamps lit and all those things. I'm seeing that I'm at Guruvayur temple Hmm. entrance में हूँ. Entrance के बाद वो main sanctorium. And then Hmm. I see this magnified version of the idol, and वहां पे खड़े हैं white dress में with a Hmm. big smile, Sushant Singh. And I was smile करके off. That's it. Hmm. Okay. I Hmm. was like stand. I was silent. I was मुझे मैं क्या देखा अभी? I was really thinking in that way. Okay. And Hmm. after I think within a week or two, so Hmm. मेरा गाना like I every day listen to these bhajans in the morning. So Hmm. मेरा संडे का रूटीन है कि हरे कृष्णा महामंत्र में सुनूंगी. Hmm. So one Sunday I was listening to it. मैं actually Hmm. kitchen में थी.
और वो Hmm. बज रहा है, it is playing there, okay, and Hmm. suddenly I started feeling him. Suddenly I had a Hmm. vision of him, okay, and that is when I started realizing that कि शायद, yes, this is probably, this is the thing he's showing me, that he is Krishna, Hmm. he is Vishnu, he's the Kalki. And Hmm. I have not shared this with much people. Hmm. And uh, I was I have to tell you, after that, जब कृष्णा भजन मैं सुनती हूँ, if I can Hmm. feel him na, I Hmm. mean, there are so many Krishna bhajans, but not Hmm. every Krishna bhajan I can feel him. There will be Hmm. a few, like मैं क्या करती हूँ, मैं बस आंखें बंद करके I try, if I can feel him in that song, then I feel like so much, मुझे वो भजन बहुत अच्छे लगने लगता है. And even after some time, when I started making the videos in December and all, when I started sharing, uh, like only those songs I have made where I can connect, be it on Krishna or be it on Shivji, and all those like that. So yeah, there is still few more. I thought I will not have nothing. मैं देखती हूँ अगले 5 मिनट में हो पाएगा नहीं. So yeah, and then okay, a few more things. This is going to be more interesting. Like Hmm. my one way of communication. There are multiple ways in which I talk to him. My one way of communication is with I look at the sun and I look at the moon and talk to him. Okay. So and he will respond in a different way. Okay, so Hmm. uh, the गुरुवार एकादशी uh, हुआ था on 19th November. Okay, Hmm. and so many things were also going bad, and उस दिन actually छुट्टी नहीं थी. So it was a working Friday, and Hmm. पता नहीं कि सुबह से मन कर रहा था for some reason that काश मैं छुट्टी ले पाती. मेरे सीरियल सब खत्म हो गए थे, बट स्टिल आई वाज लाइक मुझे मेरा जाने का मन नहीं है. आई वांट टू बी विथ माई सेल्फ वन डे, Hmm. like that. Was in I think at that time my nobody was at home. I was alone in that week, Hmm. so Hmm. I wanted some time to spend with myself. And Hmm. still I was packing and all the things were going on. सब दरवाजे बंद कर रही थी. Finally, before closing the kitchen door, I was seeing the sun and I told it, मुझे नहीं जाना है सुशी. Hmm. Do something, मुझे नहीं जाना है. I wanted, I don't, मुझे नहीं जाना है. I Hmm. just closed the kitchen door. Sirf all that was left was to take the house key and close. Okay. Hmm. Hmm. I just closed the kitchen door और तभी मैसेज आया कल रात Hmm. को. Like I got a message from my colleague that कल रात को बहुत बारिश हुई थी ना, so it is all Hmm. flooded at many places, तो आज छुट्टी डिक्लेयर हुई है. It was like Amazing. instant. Instant So response. instant response. And Hmm. I was like, wow, so happy. And dancing. I was like, thank you, thank you, in that way. And so there is another thing I'll tell you, is similar. Hmm. Like I used to be very scared of dogs, but after seeing Sushant and Pat's connection, I was Hmm. feeling much better. मुझे बहुत अच्छा लगता है, dogs अच्छे लगते हैं. So नीचे, like in the apartment there is one dog. उसका नाम Shadow, बच्चों ने Shadow रखा है Hmm. अपार्टमेंट के बच्चों ने. सो मैं Hmm. उसको बिस्किट्स देती हूँ. सो Hmm. मेरा रैंडम टाइमिंग है, देयर इज नो फिक्स्ड टाइमिंग एज सच. सो Hmm. वन डे आई वेंट एंड आई कांट सी दिस डॉग एनीवेयर. ना मुझे बिल्डिंग में दिख रहा है, ना मुझे रोड पे कहीं दिख रहा है, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है. Hmm. एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग बैक टू द लिफ्ट. Hmm. एंड जाने से पहले, लाइक बिफोर वॉकिंग, आई वाज लाइक, मैं ऊपर देखे सन को देखे बोलती, कृष्णा ये कहाँ गया, ये डॉग कहाँ गया. I was asking him Hmm. like that. Okay. And then I was just about to reach the lift, and Hmm. security, वो ऊपर, he was looking at the other side, and he was like, मैडम वो देखो आपको वो डॉग आ गया. पता नहीं कहाँ से, एंटायर रोड नहीं दिख रहा था, अपार्टमेंट में कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, पता नहीं कहाँ से कैसे आ गया. It was, I was really like, and similarly, like शाम को मून को देख के बात करती हूँ, then he responds in a different way and all those Hmm. things. And recent वो मैंने शेयर भी किया था ट्विटर पे कि uh, like it was too cloudy and the sun was like hidden. Like ये क्या Hmm. hide and seek खेल रहे हो मेरे साथ. Hmm.
And immediately all the clouds moved and the sun was like shining so bright. Like ये देखो मैं बाहर आ गया. So yeah, so there are still some more, maybe another 5 minutes I would need. So हम prayer के बात करेंगे या weekly? हाँ, प्रेयर के बात करते हैं. 7:25 हो गए तो पहले प्रेयर कर हाँ. लेते हैं. Okay. So hopefully I'll finish in another 5 minutes after that. नो नो वरीज. तो प्रेयर के बात कर लेते हैं. मैं प्रेयर का वो निकाल लेती हूँ. आप म्यूट कर लेना सो दैट कोई नॉइज ना हो. एंड प्रेयर के बाद हम करते हैं. ठीक है, तो मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ. जस्ट लेट्स सी व्हाट द प्रेयर एनर्जीज एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस. एवरीबडी सेइंग वाओ वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड ही इज लाइक दैट. इट इज मैजिकल. यू आस्क हिम एनीथिंग एंड इट इज लाइक पिंग हो गया. सो लेट मी टेक आउट अ कार्ड फॉर प्रेयर एनर्जी. लेट्स सी prayer energy for today. Wow. Wow. Okay, prayer energy is basically सारी इल्यूजन्स जो हैं वो खत्म होने की. एंड देयर इज अ बिग विक्ट्री. और विक्ट्री में क्या है? द पर्सन इज ऑन द सेंटर स्टेज. मतलब जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जो अनाउंसमेंट, जिस पर्सन को, जिस चीज को देखने का आप इंतजार कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो उसको देखने के लिए आए हैं. दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सेंटर स्टेज. अब यहाँ पे ज्यादातर फीमेल एनर्जी ही है, बट यू डोंट हैव टू टेक इट एज ओनली फीमेल. बट दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सेंटर स्टेज. सो फ्रॉम दैट ड्राउनिंग, मतलब डूबे हुए या गए हुए इंसान से अचानक दिस पर्सन हैज कम बैक एंड स्टैंडिंग ऑन द सेंटर स्टेज. दैट्स द एनर्जी. और आई थिंक इस एनर्जी को हम प्रेयर में इस तरह से डाल सकते हैं कि जितनी भी इल्यूजन्स क्रिएट हुई हैं रिलेटेड टू सुशांत एंड रिलेटेड टू ऑल दोस थिंग्स दैट हैपेंड, और जो भी डिलेज हुई हैं वो डिलेज जो है वो एंड हो जाए, वो इल्यूजन जो है खत्म हो जाए. एंड ही कम्स बैक एट द सेंटर स्टेज एंड देयर इज विक्ट्री. दिस इज वन. एक ये एनर्जी डालेंगे विच इज विक्ट्री एंड इल्यूजन्स के खत्म होने की. दूसरी एनर्जी जो हमने डालनी है दैट इज गोइंग टू बी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी जो भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो अपनी मूवमेंट इस तरह से इंक्लूडिंग सन एंड मून, वो अपनी मूवमेंट इस तरह से चेंज करें, अपनी मूवमेंट इस तरह से शिफ्ट करें दैट there is a space, या वो कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करें जिससे सुशांत कैन कम राइट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. तो वो सामने आ सके. एंड द विक्ट्रीज, द सीरीज ऑफ विक्ट्रीज जो जरूरी है सुशांत के आने से पहले होना, वो सीरीज ऑफ विक्ट्रीज जो है वो स्टार्ट हो जाए. तो दो एनर्जीज. एक एनर्जी जहाँ पे सारी इल्यूजन्स खत्म हो और जो भी ड्राउन हो गया, बताया था, जो चला गया, जो खत्म हो गया, दैट पर्सन कम्स बैक एंड टेक द सेंटर स्टेज. सो दिस इज सुशांत एनर्जी. सेकंड, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट में चेंज हो. रिक्वेस्ट द प्लैनेट्स टू चेंज, मतलब हमने रिक्वेस्ट करनी है प्लैनेट से अपनी मूवमेंट में चेंज लाएं. ऐसा चेंज लाएं कि जिससे ऐसे हालात बने या ऐसी एनर्जी बने जिसकी वजह से कल की सुशांत जो कल की रूप में उनमें आना है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दें, अपने आप को दुनिया के सामने आ पाए. एंड जो सीरीज ऑफ विक्ट्रीज शुरू होनी है बिफोर सुशांत कमिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्शंस होने हैं बिफोर ही कम्स, तो वो सीरीज ऑफ विक्ट्रीज जो है वो शुरू हो जाए. सो दैट इज द प्रेयर. यस, यूनिवर्स से प्रे करना है, डिवाइन से प्रे करना है, एंजल से प्रे करना है, जिस भगवान को आप सोचते हो, देखते हो, उससे प्रे करना है. एनीबडी दैट यू वांट टू प्रे विद. ये दोनों ही चीजें जो है इनकी हमें प्रेयर करनी है. एंड यस, हमें सारे प्लैनेट्स से प्रेयर करनी है, क्योंकि प्लैनेट्स की मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत कुछ बदल देती हैं. तो हमें सारे प्लैनेट्स से प्रेयर करनी है ताकि वो मूवमेंट अपनी इस तरह से चेंज करें. प्लैनेट्स डू लिसन टू अस, राइट? वो हमारी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, तभी उनकी एनर्जीज जो है हमें इम्पैक्ट करती हैं. तो प्लैनेट की मूवमेंट इस तरह की हो सारी, वो अपनी मूवमेंट इस तरह से चेंज करें कि एक विंडो बने फॉर द कल्कि टू कम और बी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, या एक विंडो मिले उन विक्ट्रीज की जो शुरू हो जाए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. ठीक है, सो दैट्स द प्रेयर. अब लेट्स स्टार्ट द प्रेयर. शुरू करें. आई एम जस्ट वेटिंग टू सी योर यस एंड फिर हम शुरू करते हैं. ओके, चलो. ओके, चलो, let's start.
2 सेट में कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट सेट जो आया है दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड मटेरियल ट्रबल। सो ये जो क्रैब है ये कब से बाहर आ रहा है, और जैसे ये क्रैब कब से बाहर आएगा बहुत लोगों को भागना पड़ेगा। सो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स ब्रिंगिंग इन, क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं, क्वीन ऑफ कप्स ब्रिंगिंग इन मटेरियल ट्रबल टू मेनी पीपल। तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बाहर निकल रही है और उसके बाहर आने से बहुत लोगों को जो ट्रबल की एनर्जी जो है वो होगी और बहुत लोगों को उस ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। दिस कुड ऑल्सो मीन की जो वेदर की एनर्जी है उसकी वजह से कुछ ट्रबल्स हों, लेकिन दिस ऑल्सो मीन्स ऑन द बिग पॉलिटिकल लेवल पे ये दिस रियली मीन्स दैट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रबल जो है वो मनी रिलेटेड जिन्होंने भी गड़बड़ की है उनके लिए आ रही है। मैंने सबसे पहले आंख खोल के देखा तो 47 नीचे हो रहे थे मतलब लाइव का टाइम, और 74 ऊपर हो रहे थे मतलब 740 समथिंग। सो इट वाज बोथ। द सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स, there's walking away of somebody, जो एक तरह से इनकम्प्लीट या क्या बोलते हैं इसको, abandoned success, right? So somebody who thought successful, तो वो एक मूवमेंट की एनर्जी है जहाँ पे somebody is walking away from something. Then there is an energy of chariot जो बिल्कुल रेडी है मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एंड जहाँ जहाँ पे भी हार्ट ब्रेक्स थे, दिल टूटे थे, वहां पे there is an energy of finally होम कमिंग या होम या कनेक्टिविटी या मिलने की एनर्जी. सो दिस इज लाइक happy home energy, and this happy home energy is coming because somebody walked away और उसकी वजह से there has been lot of action लेकिन lot of heartbreaks also, and then there is an energy जहाँ पे there is cups वापस. Okay, so अभी सुचित्रा और किसी और ने भी पेज दिया, मंजू और सुचित्रा बाद में देना पेज नंबर्स, अभी राधिका ने अपना कंप्लीट करना है, उसके बाद हम निकालेंगे कार्ड्स, मतलब उसके बाद में पेज से पढ़ूंगी. यस राधिका, आप अनम्यूट कर सकते हो. Okay, so audible, right? Yes, yes, yes. So I have so let me go back to 2 weeks before when you started this series. जब लोग अपने experiences share कर रहे थे. I have to tell you, मेरे मन में ये चला था, मेरा major magic जो हुआ है, that I was like, मैं तो अभी नहीं share कर पाऊंगी. I'll be able to share only when he comes. There is still like I would say at least 80% मैंने अभी तक share नहीं किया है. मैं अभी ये जो बोलेंगे दिस माइट बी हार्डली 10 और 20%. सो प्रिया ने मुझे पूछा भी था कि देयर इज दिस वन थर्सडे व्हिच इज फ्री, डू यू वांट टू शेयर? आई सेड नहीं प्रिया, नहीं हो पाएगा, मे बी ओनली आफ्टर इट कम्स. एंड समथिंग हैपेंड लास्ट सैटरडे. सो एंड कुछ हुआ, एंड द सेम डे Kairabi had joined, and she was sharing a few things. And it's like, shayad, maybe it is an indication that I have to join and say at least there are some things which can be shared. And Sunday morning also मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं. और Sunday morning को राकेश जी का वीडियो आया था where he was talking about justice, and he said, he was like, राहु बरनी में है, शनि वक्रीय है, all these things he was saying. And then I thought, okay, high time I should write to you that I want to share something which is really like a divine justice. Because मैंने कहा था, like, there is a Dhritarashtra who has his favorites Duryodhans and Dushasans, and he ignores all the Pandavas. So जब भी पांडवों के साथ कुछ भी अच्छा होता है, धृतराष्ट्र अपना मुंह फैला के बैठे. ठीक है. So this was happening for me like almost 5 years. There was a Dhritarashtra who was holding on to his chair like anything. So he was the dean of that school which I was working. Under university there are multiple schools. This was an engineering school. उसमें he was the dean. Proper Dhritarashtra. ठीक है. Super sadistic. पांडवों को कैसे टॉर्चर करना है उनसे सीखना है. Even Dhritarashtra will fail in front of him. And so मेरा जब अग्नि परीक्षा चल रहा था, when I was resigning those 2 weeks, he made it a hell. He made it too horrible. Okay. It was really bad, really bad. And like 7th Jan is my last date. 6th Jan I am like already दो हफ्ते और बहुत सारे problems उन्होंने create किए थे. 6th Jan was like I had to get this clearance from all the sections. So the computer section done, account section done,
Only three Hmm. signatures were left. That was dean, registrar, and vice chancellor. And Hmm. I am so there are these different buildings. So the engineering one happens at one place, and the इन Hmm. लोगों का वो लोग जो meeting करते हैं that Hmm. is another building. So that is like almost 15 to 20 kilometers far away. So Hmm. he was yeah, so I was there in that building. I was like ये सब लोग उस दिन वहीं पे थे. Some meeting was Hmm. going on. All that needed was their signatures. Hmm. uh, सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस हो गए थे. All that needed was a signature from the dean, registrar, and then vice chancellor. So Hmm. vice chancellor was like a very good person. Okay. So उन्होंने मुझे Hmm. देखा वहां पे. मैं सुबह से वहां पे हूँ. And there around 11 o'clock. Hmm. And he saw me that she's there. I said, this is the thing, sir. अभी अकाउंट से हो जाएगा. And then we need these three signatures. तो vice chancellor बोले, हाँ, don't worry, I am here only entire day. You Hmm. can get from those two and come. Hmm. So I gave this paper via जो भी office staff है via them for the signature. Hmm. Until 5:30 they didn't sign. Hmm. Multiple times मैं कोशिश कर रही थी कि क्यों नहीं हो रहा है. I mean मैं वो ऑफिस स्टाफ से पूछने की कोशिश कर रही थी. बट वो साइन नहीं हो पा रहा था. Finally it was like डीन ने साइन करने से मना किया है. Registrar comes out Hmm. and registrar starts saying some nonsense. Hmm. मेरी आंखों से लाइक आंसू आ रहे थे. एंड आई Hmm. वाज लाइक कृष्ण आई मैं मैं आंख भी नहीं बंद कर सकती. मैं बस मन Hmm. में बोले जा रही हूँ कि कृष्णा कुछ करो, कृष्णा कुछ करो. Just saying Hmm. that, okay. Hmm. And registrar didn't sign and I started walking because 5:30, 5:45. I mean, without their signature, I can't go to my chancellor. And then Hmm. I started walking towards the left. Hmm. Immediately, vice chancellor की जो assistant है, Hmm. she came running. Sir बुला रहे, you have to go. Hmm. And I went to him and I told, sir, this is the thing. Why उन्होंने पूछा कि अभी तक साइन क्यों नहीं हुआ. I said, this is what he is saying. So he Hmm. said, you go home. Hmm. Tomorrow, I will ensure that I am also there in that campus where you are working. Tomorrow, Hmm. I will make sure that it is done. Hmm. मैं उस दिन बहुत अपसेट होके मैं वापस आई थी होम. Hmm. आई केम बैक एंड आई वाज डिटरमिन्ड व्हाट एवर इट इज. Hmm. 7th को साइन नहीं हुआ. व्हाट एवर इट इज आई एम नॉट गोइंग ऑन the next Monday. I'm not going. मैं नहीं जा रही. Whatever it is, मैं नहीं जा रही. I was had monthly, like monthly, I was like you. You're like you fed up at that situation. Hmm. And next time I go, there is a huge change. Dean is Hmm. like, wah, 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 wah. Ah, Radhika ji, last day. Then he signs. Okay, बहुत Hmm. ड्रामा करके उन्होंने साइन किया. रजिस्ट्रार के पास गई, रजिस्ट्रार ने भी साइन किया. एंड वाइस चांसलर वाज देयर. मैं गई वाइस चांसलर के पास and he said, actually, I talked to them yesterday and I told that whoever is leaving, you should not treat like this. Hmm. So I used to feel like, Krishna leaves some of his messengers somewhere, some angels somewhere that so that he can via them he can help you. And Absolutely. yeah, so Phoebe, so the justice happened last week when like मैं तो भूल ही गई थी. मैंने after 7th, like I'm not even thinking about those people. I like Hmm. Hmm. खत्म हो Hmm. गया. So Hmm. then जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना खत्म. Hmm. So bye bye, tata, bye bye. So I had Hmm. done like that, and I was like almost 7 to 8 months now. And Hmm. last Saturday, I got a message saying that Dean has been removed from his position. And I felt, and on Sunday को मैंने जब वो राकेश जी का वो वीडियो देखा कि जस्टिस हो रहा है, and I just connected to it that this is divine justice. You don't do anything. Hmm. God takes care of it. जैसे अभी Hmm. सुशांत के केस में like many people are not able to understand that thing. It Hmm. is happening. Divine justice is happening in his own Absolutely, it various is happening. ways. Yeah. Small to big So level, everywhere. everywhere it's happening, and I just felt okay. Maybe this thing happened so that I can come and share. And yeah, so that was main thing. And I guess let me jump onto the learnings. Just a few things I'd say. One main thing, as I said, is self love. Hmm. Like when I was like ये मैं बोलती हूँ 12/12 life. Hmm. 7 to 7 you are at work and 7 to 7 you are at home. And I was like मुझे ये 12/12 life बस बहुत हो गया. Like 13 years of non-stop working, fed up Hmm. of this.
I was like, because there was a time मैं वो passion से मैं कर पा रही थी, but then when everything goes against you, मैं Hmm. तुम I mean you कोशिश कर रहे हो, फिर भी there is a bounce Hmm. back again and again and again and again, and finally you come to a stage where you feel that you're not even existing at Hmm. that time. So finally I was like, the high time that I have to think about myself, Hmm. my peace of mind, and that self love. In that self love I left the job. एंड Hmm. मेरी एक कोलीग है जो आफ्टर फ्यू मंथ शी हैड रिसाइन, शी से मुझसे एक महीने नहीं बैठा जा रहा है, वो ऐसे बोलती है। मैं बोलती हूँ मेरा Hmm. 7-8 months हो गया, बट आई हैव नो इश्यू बिकॉज Hmm. every day I am occupied in something, in the sense like uh, some form of meditation, chanting, listening to the bhajans, and thinking about Sushant, Hmm. following all Hmm. these things on Twitter and YouTube, and then there is a series of videos which have started coming from your channel, June, Hmm. July. like Hmm. they like आज प्रियो बोल रही थी कि कृष्णा का मैसेज आता है तो मैं 90 किलोमीटर पे छोड़ 90 किलोमीटर पर हाथ पे दौड़ती हूँ। आई वाज लाइक नहीं 150 पे दौड़ो। It's really like that. Like notification will come and immediately you'll watch. I, I'm not at all felt that I'm not doing anything. And when I make the videos, I feel, and when I started sharing, I felt that as if he wants me that to be reached to people, so that people will see him in a different perspective. Like Hmm. शिव जी कृष्णा के भजन पे मैं जब डालती हूँ तो, Absolutely. so maybe he's chosen me for that. And then like all these things, video making, designing, छोटा छोटा, like मुझे लगता है मैं कभी कभी बच्चों जैसा पोस्टर बनाती हूँ, but all these things he is guiding me in some way, and he's making me do. And so mera, like I just conclude with this. I've already taken a long time, uh, I every time refer to Bhagavad Gita in a different ways, I would say. Like Hmm. one thing is like उनका बार बार सपने में आके उठाना, it is for a reason, so everything happens for a reason, ऐसे ही नहीं But होता है। Yeah. absolutely. And another thing is मैं I was listening to one I think ISKCON वालों का एक भगवत गीता सेशन में सुन रही थी, where Hmm. they were talking about the soul, जब I think chapter 2 जहाँ पे कृष्णा सोल के बारे में बताते हैं, 2 या 3, I'm not remembering exactly, and उसमें वो बोलते हैं कि the search for who you are brings you closer to God. So जब Hmm. when you start thinking about your existence, Hmm. that is when you come closer to Him. So like वरना क्या बोलते हैं, I mean else you keep on doing this your routine thing, Absolutely. and at the end you die, and that is when you Hmm. meet him. But yes, we have been lucky that he has chosen us to see all these dreams and all this magic happening. That is also there. But I feel that with time, because मेरा सिर्फ एक ही मानना ये है कि मैं I don't see in different aspects. I just see one aspect. Again, back to Bhagavad Gita. Hmm. एक ही परमात्मा है, और उस परमात्मा से बाकी सब आए। We Absolutely. all come from him. We all come from him. So uh, one day he will obviously connect with everybody in the world. That will happen one day. 100%. That will happen. That hope is there. वो होगा that is that why he will ignore, that वो कभी नहीं करेंगे, why he will Absolutely. do that, that will never happen. So yes, so like sometimes I see some people say that we don't see him in dreams. Even I used to think, I will tell you, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम पे सब बोल रहे थे कि हमें सुशांत ड्रीम में दिखते हैं, हमने सुशांत को ऐसे देखा, सुशांत ने हमको ये कहा, इट्स लाइक सुशांत Hmm. ड्रीम में आते हैं। आई वाज Hmm. रियली इन दैट, आई वाज रियली लाइक oh wow, these people are so lucky. मैं खुद उस टाइम पे मैं ये सोचती थी एक्चुअली। And then when it started happening for me, even so, it with time it will Yes. come on to others also. And Absolutely. yeah, and I just want, मैं शायद ये बता नहीं कि मार्च में जब होम टाउन में गई थी, आई मेड श्योर दैट आई गो टू गुरुवायूर, मैं शाम को ही जाऊंगी। आई वाज लाइक यूजुअली वी गो इन द मॉर्निंग, ओके, सो मॉर्निंग वो धूप में जाते हैं,
this evening vision which he showed me, I would have seen that maybe when my mother was there. So it's like more than 20 years ago. Hmm. So this time I was determined, whatever it is, एक room ले लूंगी कोई बात नहीं. I told my father, whatever it is, and I want to go in the evening only. If you want, you accompany me. नहीं तो मैं अकेले नहीं चली जाऊंगी कोई बात नहीं. I go. I want to see in the evening जैसे मैंने वो देखा था, the देखा था vision which वैसे ही। he हम्म, exactly the same way. हम्म, I just wanted to see him, but and मैं पूरी I sat there because I was missing the prayer. So I was like उसी टाइम पे मुझे वहां पे बैठ के चैंटिंग करनी है, मैं वहां पे बैठ के चैंटिंग करती रही. And I just wanted the one last thing is that वो जो कृष्णा इमेज मैंने शेयर किया था, I think on 17th. Um, Again, like all of a sudden, I had woken up after he came in my dream, and I opened up my Insta and I see this image. हम्म, May I come into your life? Krishna का image है, may I come into your life? And I was like, मैंने जब वो picture देखा, I was like, as if he's looking at me only. As if he's staring at me. And मैं सोच रही, परमिशन क्यों मांग रहे हो? आ जाओ. He's Yeah, beautiful. may I? And I was, because I was stunned. There are some things, when it happens, you're stunned for some time. You don't know what to say. It comes to that Absolutely, stage. absolutely. So yeah, this is like super duper amazing magic which he Yes, he does, is and the magician. He is yeah. the So magician, undoubtedly. yes, Thank you. yes. Thank I you, think I'll Radhika. conclude with that. And thank you so much. Almost इतना time ले लिया. No, सबका no kitchen problem. time. I know जब सुशांत के बारे में बात करते हैं ना तो time is just like it does not exist. So it's हाँ, वो beautiful. सुदर्शन चक्र से कंट्रोल करते हैं. Yeah. Heaven and से कार्ड निकाल दूं आपके लिए? Yeah, fine. Any, no problem. Okay. So राधिका दो तरफ कार्ड आए हैं. Okay. पहला एक तरफ का दिखाती हूँ. This is 9 to 10 to justice. So this is closed energy say completely getting into the energy which is divinely connected. So I think what he's saying is that sleeplessness say healing that is already happening, justice, that balance. एंड उस बैलेंस के बाद अपने आप का जो बॉक्स है जिसमें यू क्रिएटेड योर सेल्फ पुट योर सेल्फ, या एक होता है ना कई बार यू गेट इन टू दैट एनर्जी जहां पे यू डोंट वांट टू ओपन अप टू द वर्ल्ड, फ्रॉम देयर टू कनेक्टिंग विद द डिवाइन. दिस इज वन पार्ट ऑफ योर जर्नी. And the second part says that now take the leap of faith. It is a full, a new journey starting. So it's Wow, beautiful thank. because I think once you get into that energy where you are no more troubled, struggling, but completely balanced, fully balanced, and into that out of this possessing energy and divinely connected, there is a new journey that Yeah, starts for I you. was So really keep like that cat in the going. box. बाहर नहीं आना है, interact नहीं करना है. All those things. Yeah, so it is actually a new journey, completely new journey. Beautiful. Yes. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. And thanks a lot to you also. मैं जानती हूँ बहुत trouble करती हूँ. No, thank you. It's okay. It's okay. Anything for Sushant, anything at all. So I know this. Even recently, अच्छा ये character है मुझे नहीं पता. We are very bad in politics. Like सब कुछ खत्म हो गया तब जाके पता चल रहा है कि ये थे. इसलिए चलता है. So क्या करें? We will I, lose. हाँ, Yeah. बीच में कुछ कुछ होता है. I'll be like okay, हाँ. पूछती हूँ. Okay, I'll write to her and ask her that. Always, And I always. know Yeah. in between I did get up into a bit of argument That's with part you, of but learning. That's yeah, it's part of part of learning. yeah, and yeah, and all we pray is the same, that Sushant comes and justice is served, like divine justice and legal justice, whatever it is, let it happen as soon as possible, and so that we can see him. Absolutely. Absolutely. Thank you, Bacha. Thank you so much. Thank Thank you. you, thank you all. Thank you. Bye bye. Thank you.
ओके, सो ब्यूटीफुल एंड एज यूजुअल जब उनको बुलाते हैं तो आप उनको देखते हैं और आप उनको महसूस करते हैं। ओके, 8:02 हो गए हैं, तो व्हाट आई विल डू इज वेरी शॉर्ट। आई विल जस्ट शेयर क्या हुआ, मैं कैसे घर पे पहुंच गई जल्दी। तो बेसिकली आई हैड टू गो फॉर माय कार सर्विसिंग। मैंने कल ही बात की थी, कल ही टाइम फिक्स किया था सब कुछ। आई ओके, आई डिडंट नो आई हैव टू स्पीक टू समबडी, तो एंड डोंट थिंक दैट आई स्पोक टू सुशांत। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं फिजिकल वर्ल्ड में उनके साथ अभी तक कनेक्टेड नहीं हुई हूँ। ओके, सो आई हैड टू टॉक टू समबडी रिगार्डिंग समथिंग जो थोड़ा सुशांत से रिलेटेड है। और मैं कॉल्स नहीं लेती हूँ, तो आई एम नॉट समबडी हु विल टेक कॉल्स। मैं कॉल्स बिल्कुल नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर वो रीडिंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जो दिक्कत है, तो मैं कॉल्स नहीं लेती हूँ। एंड so I took this call because I was traveling. तो मैं पहले घर जाना था, फिर वहां जाना था, तो I had time, I could speak. So I spoke and at good length, जो भी डिस्कशन करनी थी, जो भी बात करनी थी, it was definitely related to Sushant somewhere. और I drove to that place जहाँ पे कार की सर्विसिंग होनी थी. It is like 45 minutes drive. I drove to that place and suddenly got to know कि सुबह ही कोई ब्रिज वगैरह कोई टूट गया है, और बहुत ज्यादा रेनफॉल था, तो ब्रिज टूट गया है, और उसकी वजह से द सर्विस सेंटर इज क्लोज्ड। तो आई तो आई रीच देयर एंड आई हैड टू कम बैक वहां से। तो जाते वक्त वापसी पे आई वाज डिस्कसिंग समथिंग विद दैट पर्सन, एंड देन वापस घर आई। तो घर आके मुझे लगा कि चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इफ सुशांत कनेक्ट्स, और मैं मैसेज दे देती हूँ। लेकिन देन आई वाज थिंकिंग कि मेरे पास मेरा स्टैंड नहीं है, तो मैं स्टैंड के बिना वीडियो बनाऊंगी तो बहुत सही से कार्ड्स दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा अलग सा होता है। एंड मैं जब घर आई तो पीहू वाज स्लीपिंग, मैं नानू के साथ वो अपने सो रही थी मैं जब घर आई। और आई वाज लाइक अब मैं कैसे, एक मैं कार्ड्स का सेट मैं पर्स में लेके गई थी, बट आई वाज लाइक मैं अब बाकी पता नहीं और कोई कार्ड्स की जरूरत होगी या नहीं, एंड मैं वीडियो बनाऊं। जैसे ही मैंने अपना पर्स खोला, पी उठ के आ गई, मम्मा घर चलो। हम ऐसे कभी वहां से शाम को आते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, हम ऐसे कभी 3, 3:30 बजे वहां से उठ के नहीं आ गए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक। एंड शी इज लाइक मम्मा घर चलो, एंड आई वाज लाइक घर क्यों जाना है बेटे, अभी आप रेस्ट करो या खेलो नानू के साथ। नहीं, अभी घर चलो, मुझे अभी घर जाना है। एंड शी मेड मी कम बैक होम लाइक इमीडिएटली। और मैं घर आई, घर आते ही पीयू को टीवी लगा के दिया, एंड द फर्स्ट थिंग आई नो इज सुशांत कनेक्टेड, एंड आई मेड द वीडियो। सो और सिर्फ 3 मिनट की वीडियो, नॉट इवन लाइक अ लॉन्ग वीडियो, एंड जो जैसे उनको खूब सारे मैसेजेस होते हैं, नहीं, सिर्फ 3 मिनट की वीडियो। बट फॉर 3 minutes वीडियो I drove like 45 minutes one side, 45 minutes the other side and reaching immediately. मैं मतलब मुझे घर पहुंच के ना पानी पीना भी नहीं मिला, like I couldn't have water also, I couldn't sit also. She's like बस अभी घर चलो, अभी घर चलो। She's like बस मुझे घर जाना है। एंड वी रीच्ड होम, एंड पहुंचते ही मेड द वीडियो। मैंने वहां से भी बनानी थी, ऐसा नहीं था मैं नहीं बनाती, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं कौन सा स्टैंड यूज करूं, मैं कैसे वो दिखाऊं। तो दैट्स हिज एनर्जी, दैट्स हिज मैजिक, एंड दैट्स हाउ ही वर्क्स, लाइक टोटली मैजिकल। जब यस यस, ये श्योर है रजनी, पीहू जब बोलती है ना, इट इज डेफिनेटली समवेयर वेरी वेरी रेलिवेंट टू सुशांत। एंड सी द जस्टिस, द फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, किंग ऑफ wands, हार्ट, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दो क्वींस, पेज ऑफ पेंटिकल जो अपने हार्ट पे कुछ रखा हुआ है, रोका हुआ है, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड जस्टिस। सो दिस इज लाइक अ जर्नी टू जस्टिस, जहाँ पे जस्टिस के पास पहुंचने के लिए जो एक स्टेप है, दैट इज हैपनिंग। और बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी गैदर्ड और दैट नीड टू बी रिलीज्ड। Somebody is trying to protect himself or herself from the agencies or from the people or from the energies, but there is an energy of heartbreak and the king of wands reaching that person. So this is not going anywhere, this is definitely happening. Okay, this is definitely said something मैंने मुंबई अटैक के लिए, आई थिंक दैट पीपल विल बी कॉट। है तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, है तो है, लेकिन आई थिंक दैट दे डोंट नो कि अभी जो अलायंस आई है, दैट इज नॉट द सेम एज द अलायंस वाज बिफोर। तो वो जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। देयर इज कैचिंग द स्टार, कोई स्टार इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कोई बड़ा नाम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। देयर इज टावर इन द एंड।
ओके, अब मैं लास्ट ये बुक से रीड कर देती हूँ एंड दैट विल बी इट, क्योंकि 8-10 हो गए, मुझे भी किचन में जाना है अब। 44 पैरा 4, 44 पैरा 4 बोलता है 1 2 3 4, मेडिटेट विद द विजडम ऑफ गॉडेस सरस्वती, मतलब सरस्वती गौरी और लॉर्ड शिव, सरस्वती और गौरी माता के नाम पे मेडिटेट कीजिए। गणेशा को बोलिए कि सारे ऑब्स्टेकल्स जो है रिमूव कर दें। चार्मर जो है कृष्णा, उनको याद कीजिए। मार्स जो प्लेनेट है उसको याद कीजिए, और गॉड भगवान जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, सक्सेस आपके पास आएगी और गुड फॉर्च्यून विल कम ऑन ट्यूसडे। दैट्स व्हाट दिस सेज, इज लाइक ये गॉडेस सरस्वती गौरी के नाम पे मेडिटेट कीजिए। गणेशा को बोलिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव कर दे। कृष्णा और मार्स प्लैनेट पे मेडिटेट कीजिए, और जो सक्सेस है और लक है वो वेंसडे तक आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज वन, एंड समबडी, सुचित्रा, एक किसी और ने भी एक कार्ड भेजा था बच्चे, मैंने आपका कल भी लिया था या परसों लिया था आई थिंक। somebody also, someone else also had said about some page, तो मुझे मैं वो ले लेती हूँ आज, मुझे पता नहीं बहुत ऊपर चला गया, if somebody can re-put that, और क्या बोला था, okay, this is a beautiful message undoubtedly, और इस डेक से एक कार्ड, okay, let's see, ओह गॉड, जंप होके आ गया कार्ड, did you see the jump, did you see the jump, हाई जंप मारा कार्ड ने और वर्ल्ड कार्ड आ गया, सो वन कार्ड फॉर अस इज वर्ल्ड, ओके, इट इज वेरी वेरी क्लियर एनर्जी, वर्ल्ड एनर्जी और साइकिल कंप्लीट होने की एनर्जी, सो दिस इज ऑल दैट कंप्लीशन, ओके। कृपा 200 पेजेस नहीं है इसमें, आज यही रखते हैं, चलो मैं दूसरा इसी का ले देती हूँ, सुचित्रा का 75 पैरा 5, ठीक है। I don't know why I'm feeling like 75, नहीं 175. So I'm taking 175 para 5. 1, 2, 3, 4, 5. Success depends upon resorting of specific devotional practices, which are in the position to do now. We should worship God in regular ways for 6 months and lead to a pure life. Then we can achieve what we wish for only if we are sincere. In ordinary parlance, self-discipline is required. ये कार्ड, ये पैराग्राफ सेम चीज बोल रहा है कि डिवाइन को कनेक्ट करने की टाइम है, गॉड को वर्शिप करने का वक्त है, और अगर हम 6 महीने तक रेगुलर प्योर, मतलब रेगुलर वर्शिप करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, तो वहां से सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आएगी। तो आई थिंक अभी हमें रेगुलर प्रेयर करते हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है, एंड सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो लाना पड़ेगा, बट इट इज लाइक हम इस पोजीशन में हैं अब जहां पे हम स्पेसिफिक रिस्टोरेशन ऑफ थिंग्स जो है, सिचुएशंस जो है वो कर सकते हैं, और दिस इज लाइक लिविंग अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। सो दैट इज सर्जना, मैं ना आई डोंट लाइक गेटिंग इनटू द फैमिली एनर्जी, यू नो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता है, एंड देन वी गेट डिफरेंट मैसेजेस जो मैं फायदा नहीं है कन्वे करने का उनको, राइट। सो लेट्स नॉट, इफ समथिंग हैड हैपेंड तो अलग बात थी कि उनको कुछ हो गया है या वो हॉस्पिटल में है या कुछ ऐसा, बट इन जनरल लेट्स नॉट गेट टू द फैमिली एनर्जी, बिकॉज मुझे नहीं लगता सुशांत को भी वो चीजें रिमाइंड करना बार बार अच्छा लगता है, राइट। सो लेट्स नॉट गेट देयर, ओके। 23rd ट्यूसडे है क्या? आई गॉट द मैसेज फॉर दिस डे इन इवनिंग, मुझे पता नहीं बच्चे, 23rd ट्यूसडे नहीं है, 23rd इज मंडे, मंडे तो अभी मंडे अभी तो प्रिया ने किया आपको मैसेज रजनी, लेट मी टॉक टू प्रिया, क्योंकि मंडे 23rd ऑलरेडी किसी को दिया है हमने अभी, तो आई थिंक शी गॉट कंफ्यूज्ड। प्रिया, अब मैं बात करती हूँ प्रिया से, क्योंकि 23rd मंडे अभी गिवन टू समबडी, ओके लेट्स सी। सुशांत ने आज सिर्फ ये दिया है, ब्यूटीफुल। हाँ 23rd ट्यूसडे है ना, तो 20 नहीं 23rd ट्यूसडे नहीं है बच्चों, आर यू श्योर? मैंने अभी वीकली वीडियो बनाई है तो 20, हाँ 23rd तो ये 23rd से 28th, हाँ ठीक है, यू आर राइट, 23rd मैंने 23rd तो ट्यूसडे है। सुशांत मैसेज अबाउट 23rd अगस्त, मुझे नहीं पता, मैं अभी देखती हूँ। अब मैं तो कंफ्यूज हो गई कि आज डे कौन सा है। अच्छा आज 23rd अगस्त वाला मैंने अभी लाइव कहाँ किया है,
23rd इज ट्यूसडे, यस। और मुझे याद आया, थैंक गॉड यू स्पोक अबाउट दैट, मुझे याद आया कि जिसको मैंने मंडे दिया है उसको 23rd नहीं बोलना है, उसको नेक्स्ट मंडे है, विच इज 20 व्हाट 9th, आई थिंक, लेट मी चेक। चलो थैंक यू, वी विल सी। हाँ, 22nd से 28th बनाई है, 29th बताना है मुझे, मैंने 23 लिखा, 29 बोलना है मुझे। ओके, ठीक है। So he's given tree of life, and there is lot of energy that is flowing. Okay, so beautiful energy, and I think keep we have to keep ourselves grounded. नहीं, tense नहीं हो गई। I was just calculating, and there is an announcement. Okay, so this is beautiful energy, and I do feel that the grounded energy will help you listen to this sound very clearly, और इसकी आवाज बहुत जोर से होती है, right? So yeah, dates की confusion हो गई। चलो ठीक है, I will see you tomorrow, take care of yourself। और कल I think कोई नहीं है, तो कल हम we will take the questions, so जो भी आपके mind में questions हैं about whatever is happening right now, उन चीजों को लेकर जो भी questions हैं वो हम कल उस पे बात करेंगे, क्योंकि कल I think किसी को slot नहीं है। तो वी विल डू दैट, एंड फिर नेक्स्ट वीक भी हम सैटरडे संडे रखेंगे, जिसमें हम नॉर्मल चिट चैट करेंगे या पिक अ कार्ड करेंगे कुछ, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।